Hi guys, welcome back to MotorManiacs. This is Prateek. Hi guys, this is Akshay. So guys, as you have already seen, आपको पता लग गया होगा कि जो हिमालयन 450 है उसकी फाइनल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है. मीडिया राइड शुरू हो चुकी है मनाली से सिसु लाहौल स्पीति में. प्लस इसका ब्रोशर भी लीक हो गया. Guys, can you see the smiles on our faces? This is what we expected from a bike. Man, it's a complete upgrade to the 411. Amazing. चलो हमने बहुत सारी स्पेकुलेशंस पहले तो हमने क्लियर कर ही दी थी. स्पेक्स बहुत सारे पहले ही क्लियर कर दिए थे. काफी स्पेक्स हमारे सही निकले थे और बहुत सारे स्पेक्स सही निकले हैं जो हमने बोले थे. बहुत सारे स्पेक्स सही निकले हैं. Where do you want to start from? Because there's so much to go through. Let's talk about the engine first. Man. इंजन को इसको 452 भी नहीं बोल रहे, 450 बोल रहे. It's a Sherpa 450 engine. Sherpa 450. The name. Amazing. And proper 40 bhp and 40.2 Nm torque. 40 bhp, 40 Newton meters of torque. जैसे हमने कहा था, completely modern engine, liquid cooled, 4 valve per cylinder, dual overhead cams, 11.2 के आसपास का compression ratio, the highest we have seen from a Royal Enfield. Correct. So they are not holding anything back. Correct. Not only that, I mean, the name Sherpa, I mean, that signifies a lot, right? अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, मैंने अभी जस्ट चलाई है. आपने मतलब ड्यूरिंग द मीडिया राइड एक छोटी सी क्लिप बाहर आई है. बंदे ने हिमालयन को सीधी चढ़ाई पे कितना ऊपर चढ़ा दी है. इट्स अ शार्प इंक्लाइन और आराम से शेरपा की तरह गई है. जस्ट फॉर एन रेफरेंस, शेरपा इज बेसिकली नेपालीज को बोलते हैं जो एवरेस्ट वगैरह चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं, जो पहाड़ी चढ़ते हैं. इट्स वेरी इजी फॉर देम. तो हिमालयन ने भी वही इंजन यूज किया है. They tend to be the toughest people on earth, guys. Correct. No doubt about it. And अगर आप स्पेक्स को थोड़ा और नजदीकी से देखेंगे, for the very first time, a single cylinder Royal Enfield, which is a short stroke engine. Correct. Not a long stroke engine anymore. So they are diverting from their DNA to make this as modern as possible, as powerful as possible. Exactly. And it is powerful enough. It's powerful enough. काफी है. If you look at the power curve जो इन्होंने अपने ब्रोशर में डाला है, जो लीक हुआ है, the torque, they have focused on the torque again because of course it's a ADV bike. ADV में torque चाहिए शुरू में. उन्होंने low down काफी अच्छा torque किया. And being a liquid cooled engine, guys, again, not only is the highest compression ratio of any Royal Enfield, I believe it must be the most powerful single cylinder, modern single cylinder that they made. And that's revving above 8,000 RPM. Yes, that's the first thing. So this is so you can easily expect top speed around 150 easily from this absolutely, bike. आराम से. So क्योंकि हमने इसकी टेस्ट जो अभी न्यूज देखे थे, टेस्ट चल रहा था, 130 को प्यार से होल्ड कर रही थी बाइक. आराम से होल्ड कर रही थी. और क्या चाहिए था? Earlier Himalayan was good, but people expected a more juice on it. 100 से ऊपर it dies out. ये 130 पे होल्ड कर रही है. आराम से होल्ड कर रही है. And that is all what you need. Touring के अंदर आपको you don't need more than that. अब let's address the elephant in the room. Weight देख के मैं हैरान हूँ. ड्राई वेट गाड़ी का सिर्फ 181 kgs है. That is equivalent to like your Hunter. Hunter 350, 181 kg. Yeah. So the wet weight is also around 196 with 90% of the fuel and engine oil. मतलब आप लेके चलो 16.5 लीटर का टंकी है. सो एटलीस्ट 15 लीटर का फ्यूल के बाद और इंजन ऑयल के बाद जाके 196 बनती है, जो भी करंट हिमालयन का वेट है. Yeah. That means it is lighter. The current Himalayan is actually heavier. It is 199. Despite this having a liquid cooled engine, despite this being a bigger bike, having bigger tires and everything, this is lighter. What else do you need? अब और क्या चाहिए यार? एक ADV, एक टूरर को. मतलब I'm just impressed. Yeah, so a big huge leap. I mean, जो इनके development engineers हैं, जो इन्होंने सारे वहाँ से hire किए हैं, they are showing their work. And ये बाइक एक साल से टेस्टिंग में थी. And I'm pretty confident they won't do blunder this time. मतलब you will enjoy it. Blunder से अगर बात हम कर ही रहे हैं, तो let's come on to the chassis. हाँ. इसकी chassis, so, it's a twin spar chassis. And if you look at the chassis closely, अगर आप उसको उसमें देखते हैं तो बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है. It encompasses the engine proper. मतलब देखने से लग रहा है this chassis is going to have a lot of strength. पर माइक में बोलो अक्षय, लोगों को सुनना भी. आपको सुन रहे होंगे थोड़ा माइक में आके. हाँ, I believe it's going to be a better chassis. Exactly, it will be. क्योंकि अभी टेस्टिंग भी चल रही है, फाइनल टेस्ट जिसको उन्होंने नाम दिया. एंड सिद्धार्थ लाल का इंटरव्यू भी आया था कि they were very proud of this Himalayan
एंड नॉट ओनली, अगर आप एक डिकोड करेंगे सिद्धार्थ लाल की इंटरव्यू को, उन्होंने ये कहा है वी हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक्स। सो जो बात कर रहे हैं वो शैसी की बात कर रहे हैं, पुराने हिमालयन की, Correct. एंड दे हैव, आई मीन दे मस्ट हैव लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, क्योंकि अब जो इसकी टेस्टिंग हुई है, दे आर टेस्टिंग, जिसको कह सकते हैं, दे आर जस्ट टेकिंग इट टू द मैक्स, सो दे आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। It's important. So, and another exciting bit. Let's come on to the colors. So we have the brochure here. Let's see. एंड प्लस आपको वीडियो में ब्रोशर दिख रहा होगा। Yeah. Let's come on to the colors. Very exciting colors, guys. Have to be. एक तो शेरपा व्हाइट है, एंड देन देयर इज द हानले, आई मीन जो हानले इज अ प्लेस इन लद्दाख, Yeah. अगर आपको पता हो, एंड वहाँ पे सबसे बड़ी इंडिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी भी है। Yeah, so we've got Hanle Black, which is the yellow and black combination, which is looking amazing. That's typical of our lot. Yeah, and Comet White, which is going to be like a skin sort of a white. Comet sort of is color. basically derived from the name Comet. That's a comic name, I believe. It's again in Lahaul Spiti. Yeah. So we've got Slate Himalayan Salt, which is a Nardo Grey and Correct. a red tone on it. Then we've got Slate Poppy Blue, and we've got the Kaza Brown. Kaza again. Man, look at the color, man. Beautiful colors. Beautiful colors. Beautiful colors. Our pick is going to be the Hanle Black, which is looking amazing, especially with the golden rims. Yes. And but the Kaza Brown is looking amazing as well. I mean, and not only that, the way they've named their colors, क्या नाम रखे हैं यार? And मतलब अगर let's come to another spec, the instrument console. Oh, Man, it's absolutely. you have never seen any bike under 10 lakhs. So this is proper Google Maps, huh? This Google is Maps. with full Google Maps that triple you see dash on your navigation. Much better what they are offering right Correct. now. This is a step above to the regular triple navigation that you see. मतलब आप इस बाइक को लेकर कहीं भी जा सकते हो, मतलब यू आर, मतलब सब कुछ है इस बाइक में। आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट थी ना, यू ऑलरेडी हैज दैट। ओके, दिस इज द परफेक्ट बाइक दैट आई एम लुकिंग फॉर माय ट्रैवलिंग, टूरिंग, एंड व्हिच शुड नॉट बी एक्सपेंसिव। Yeah, इसमें सब कुछ है, सब कुछ है। दिस इज द परफेक्ट बाइक। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ही रहे हैं, so switchable ABS and 2 riding modes. One is going to be road and one is going to be power. So जो पावर इन दोनों स्पेक्स में बनेगी वो सेम होगी, ओनली द मैपिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट, द टोटल रिस्पांस इज गोइंग टू बी डिफरेंट। करेक्ट। दैट्स अ गुड थिंग एज वेल। देन वी हैव अगेन जो अभी हिमालयन में है, 21 इंच फ्रंट एंड 17 एट द रियर, एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक की जो स्पेक्स हैं, दिस वाज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, एंड 230 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, व्हिच इज 10 mm मोर देन द प्रीवियस वन, व्हिच इज 10 mm मोर। एंड अच्छा, अब आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसे सीट हाइट क्या होगी। This is amazing, guys. So they're offering 2 options. One is the regular seat height, which is 825 mm. Then you have a lower seat option, which is 805 mm. Which is equivalent to the current Himalayan seat. Which is Same. very good. And keeping in mind, एक average Indian की height अगर हम mind में लेते हैं 5'8", 5'9", Easy. 805 mm is very more good. than enough. So they know their customers, right? मतलब जो Interceptor की seat height है, it's same. Then we have amazing suspension as well. Very good travel suspension. Showa suspension for which is easily it's written there कि हम Showa के Showa suspension के दे suspension दे रहे हैं। We have done our R&D और आपको perfect bike देंगे। Yeah, so they are matching up to the international competition. अगर आप Kawasaki देखते हैं, जब आप Triumph देखते हैं, they are using that sort of a suspension brand in their bikes. Correct. So now RE is giving that sort of a suspension in a price range of, I believe, around 3 lakhs, which is going to be the expected price. I'm expecting 3.3 or 3.4 on road, which is not bad. And plus the accessories offer है, वो भी आपको ब्रोशर में आगे दिखी होंगी जाते हुए। And वो सब मिला के you have a complete package under 4 lakhs. और क्या चाहिए? और and you have a brake upgrade as well. Himalayan के अंदर कुछ लोग कहते थे कि हाँ, the brakes can be a little bit weak. 320 mm, so they have increased the rotor size. And पीछे is the same 270, but आगे की brake is what matters a lot. 260 थी पहले, 270 ये भी बड़ी है। Yeah, थोड़ी सी भी बड़ी है। Increase that as well. And एक और चीज, सबसे नई चीज इसके हिमालयन के अंदर, all lights are LEDs. Yeah. Even though आपको जो rear जो आपका लैंप है, यानी जो ब्रेक लैंप है, वो बाइक में इंटीग्रेटेड है इंडिकेटर्स के अंदर, which you have seen in Harleys. Yeah, absolutely. Indicator works as the आपको brake lamp as well.
Yeah. So I mean, guys, this so much. There's so much going on. I believe I can say this safely. This must be the first modern Royal Enfield that we have seen. And Properly modern Royal Enfield with none of the vintage charm and all that things. क्योंकि अब वो सारी it चीजें, is a more purposeful bike now. it is a more purposeful bike. The name Himalayan. They had Earlier to do bike, it. earlier bike did the justice to it. This will take it leaps forward. I think इतना मैं confident हूँ bike को लेकर के. And our videos will come a bit late, but rest assured, proper test, long term review, सब कुछ लेके आएंगे. man, this is Definitely for sure. We are, So channel को सब्सक्राइब करके रखना guys. This is And really good. पक्का हम लोग ही लेके आएंगे. And जैसे कि आप पुरानी वीडियो में आपने देखा ही तो why did I buy Bullet 350? अब हम देखेंगे why Akshay booked Himalayan for Sherpa 450. that is going to be coming up soon, guys. And just looking at the brochure, a mystical place. That is always changing and changing fast, which is true for the mountains, is true for life. Paths change, goals change, roles change. We change. Yes, they did. We change. That too for good. Royal Enfield is changing. Correct. This if you unlock this brochure, there's a lot to be seen. Correct. And guys, we are expecting a path breaking motorcycle. Must be the most important motorcycle for the year. If you do the same thing that it did with Classic 350, Yes. you will get a long waiting period. I Long- just have a small message from Mr. Siddharth Lal. Yeah. Sir, please upgrade your manufacturing unit. You will be receiving a lot of bookings. lot of bookings, Lot of guys. bookings. I mean, And we might be one of the customers we again. might be one of the customers who are going to be in the queue of the lot of long waiting lists. So, You did a tremendous job. I'm impressed. The owner of this Eicher Motors is going with the riders and he's testing it out. the best journalists in the world are in the Himalayas right now as we speak. The best journalists in the Correct. world, and because this bike is getting so much attention, कि वो लोग भी आ रहे हैं हाँ, to review this bike. करेक्ट. इची वुड्स ने जब उसका बाइक का पूरा किया था, शी डिड इट संस्कार वैली, क्या नहीं किया उस लड़की ने. एंड शी वाज द वुमन हु डिड 6 continents on a older Himalayan. Yeah. And she was amazed by this bike. And I think guys, हमको पुरानी हिमालयन को भी कमेंड करने की जरूरत है. रीजन ये कि ये हिमालयन जो बनी है, ये सारी मिस्टेक्स और लर्निंग्स जो पुरानी हिमालयन की थी वो उन्होंने सारी फिक्स करी हैं. एंड दैट हैज बीन अ वेरी ह्यूज लर्निंग I think हमें एक 411 पे ट्रिब्यूट वीडियो भी करनी चाहिए ना. We'll do it soon. That bike had a lot of issues, But still- but that was a good bike. Correct. So guys, do subscribe, like our videos. Lot of new content coming up on Exactly, the 450. exactly. Stay tuned. Thank you guys. Thanks. Thanks for watching, guys. Thank you.